Dear students, I am going to tell you more about innate immunity, and this is my lecture 5. Today I am going to tell you about inflammatory response, and this is part 1. This is an overview of inflammatory response, and in the next part I shall be telling you details of its mediators. So, what is the definition of inflammation? Inflammation is the term given to the series of events that surround an immune response and display a number of characteristic features, including local swelling, which is also known as edema, redness, which happens due to capillary dilation, pain, and heat in the localized area where we see inflammation. These features are collective consequence of the release of cytokines, chemokines, vasoactive amines from macrophages and mast cells upon initial encounter with the pathogen. This is a sign of macrophage. This is designated by this. So wherever you see this M and phi, uh, I'm uh, I'm talking about macrophages. So byproducts of complement activation also help in inflammation, and these are C35 and C5, C3A and C5A, which contribute here through promoting uh, neutrophilic chemotaxis and activation of mast cells. Capital M here I have written for mast cell. These mediators of inflammation help to recruit neutrophil and plasma proteins to the site of infection by inducing vasodilation of blood vessels close to the site of infection and by acting as chemotactic factors for neutrophils circulating in the blood. Now we will see few processes here, how inflammation proceeds. In classical inflammatory response, swelling is seen, plus redness of skin tone and tenderness is seen in the area. Swelling seen is due to gathering of extra cells and fluids at the site of infection. जहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन हो रहा है, चोट लगी है, वहाँ पे रेडनेस दिखेगी, टेंडरनेस, स्किन सॉफ्ट सी रहेगी, स्वेलिंग दिखेगी, वहाँ पे लगेगा पानी भर गया है, एंड ये होता है क्योंकि वहाँ पे विसिनिटी के हमारे सिस्टम के एक्स्ट्रा सेल्स पहुंच जाते हैं और फ्लूइड भी आके भर जाता है. दिस इज एन इम्यून रिस्पॉन्स टू क्योर एक्चुअली द इन्फेक्शन. Now, mast cells collaborate with macrophages in vasodilation, and there is a key role of macrophage in the initiation of inflammation. Macrophage जो है वो inflammation शुरू करने में बहुत ज़्यादा helpful होता है, उसका रोल होता है mainly through the secretion of cytokine and chemokines in response to infection. Engagement of PRR for opsonized microbes. ऑप्सोनाइज्ड माइक्रोब्स के बारे में मैं पहले ही बता चुकी हूँ. पैथोजन है, उसको या तो एंटीबॉडीज कोट कर लेती हैं या कॉम्प्लीमेंट के फैक्टर्स कोट कर लेते हैं. इस तरह का पैथोजन, इस तरह का पार्टिकल ऑप्सोनाइज्ड कहलाता है. नाउ वी हैव इन आवर बॉडी द रिकॉग्निशन मैकेनिज्म ऑफ दीज ऑप्सोनाइज्ड पार्टिकल्स. Here in the case of inflammation or any immune activity where macrophages play their role, they become activated. और यहाँ पे आप समरी दी हुई है मेन प्रोडक्ट्स की जो कि इन्फ्लेमेशन में रोल करते हैं, और you can see that pathogen is attached on the macrophage. This is electron micrograph on activated macrophage. So TNF, tumor necrosis factor, is one such
chemokine, which causes activation of local endothelium, initiation of cytokine production, up रेगुलेशन ऑफ एडिशन मॉलिक्यूल्स. अब इन सब का रोल हम ग्रेजुअली देखेंगे कि कैसे क्या इनका अलग अलग अपना अपना रोल क्या है. अगेन इनका एक्सप्लेनेशन देखेंगे. रोल तो ये है मेन, लेकिन ये कैसे क्या होता है, मैकेनिज्म क्या है, वो देखेंगे हम. IL-6 triggers production of acute phase protein from liver, enhances antibody production from B cells, and induces T cell polarization. IL-8 triggering of neutrophil chemotaxis, also chemotactic for basophil and T cells. Activation of neutrophils takes place and it promotes angiogenesis, माने कि नई वेन्स बनने के लिए भी ये प्रमोशन करता है. IL-12, इंटरल्यूकिन 12, इंटरल्यूकिन 8, इंटरल्यूकिन 6, ये फुल फॉर्म्स है. IL-12 causes activation of NK cells, natural killer cells, and polarization of T cells to helper cells. ये सारे इसके इनके जो फैक्टर्स रिलीज हुए, उन्होंने जो मेन फैक्टर्स हैं एक्चुअली जो यहाँ पे हमें ज़्यादा काम आएंगे. This is only a small fraction of numerous solvent mediators that are liberated from PAMP activated macrophages. तो ये कुछ फैक्टर्स दिखाए गए और उनके आप देख सकते हैं कितने ढेर सारे फंक्शन है जो अल्टीमेटली यहाँ पे इम्यून प्रोटेक्शन में काम आएंगे, प्लस इन्फ्लेमेशन कॉज करने में हेल्प करते हैं. दूसरा सेल हमने बताया मास्ट सेल है जो हेल्प करता है मैक्रोफेजेस के साथ इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में. ये मास्ट सेल आप देख रहे हैं, काफी ग्रेन्यूल्स है इसके अंदर, और these granules produce these cells produce histamine and chemotactic factors and cytokine production. ये these mast cells, mast cell increases permeability of blood vessels due to release of these factors from numerous cytoplasmic granules. ये आप पहले ही बताया मैंने. और साइटोकाइन, कीमोकाइन और हिस्टामीन है. नाउ इट्स रोल, प्रोवोकेशन ऑफ मास्ट सेल्स. मास्ट सेल कैसे एक्टिवेट होता है, कैसे फिर अब वो ये साइटोकाइन, कीमोटैक्सिन्स और वैसोएक्टिव एमीन्स का जनरेशन और प्रोडक्शन करता है. उसकी वजह क्या है? डायरेक्ट इंजरी, कोई सीधे इंजरी हो रही है तो मास्ट सेल एक्टिवेट हो जाता है. Binding of specific antigen to IgE, which in turn binds to these cells. This specific antigen means one pathogen which binds, which is capable of binding IgE variety of antibody. Then that will bind to that, and both in the form of immune complex they will come to mast cell, and mast cell can recognize this part, as a result of which this whatever the function of mast cell will happen, that will kill, that will be for that will a kind of immune activity towards this antigen or pathogen. Then a mast cell may be provocated, और अपना एक्शन करने के लिए उसको प्रोवोकेशन मीन्स कि उसकाया जा रहा है, उसको कहा जा रहा है कि करो करो. तो अगर वो पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स देखता है पैथोजन के ऊपर, तो उसके लिए यहाँ पे रिसेप्टर्स हैं, इससे ये एक्टिवेट हो जाता है और प्रोडक्शन करने लगता है इन तीनों वैरायटी की चीज़ों को. और in response to complement components like C3A and C5A. Complement system के बारे में भी हम अलग से पढ़ेंगे. तो more than 30 proteins are there circulating in body fluid, in blood, and they work for innate immune system. What is the role of histamine? And this provokes dilation of post capillary venules, activates local endothelium, increases blood vessel permeability, irritation of nerve endings. इतने काम करता है. नर्व एंडिंग जो हमें पेन महसूस होता है इन्फ्लेमेटरी
इन्फ्लेम्ड स्किन पे या इन्फ्लेम्ड पार्ट ऑफ आवर बॉडी, वो एक्चुअली क्या है, वो एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है. अगेन, this is an evolutionary adaptation that encourages host to protect infected or injured area to minimize further damage. अगर हम महसूस नहीं करें कि हमें इंजरी हुई है, हमें पेन हुआ है, तो हम हो सकता है उस बॉडी पार्ट को हिलाएं या कहीं से भी टकराने दें. लेकिन जब वो इन्फ्लेम्ड होता है, रेड होता है, टेंडर होता है, तो वो हम उसके बारे में ध्यान रखते हैं. हमारा माइंड उसको रिमेंबर कर रखता है कि इस पार्ट को कहीं और चोट नहीं लगनी चाहिए, फर्दर वो उसमें डैमेज नहीं हो. सो पेन इज ऑल्सो काइंड ऑफ प्रोटेक्शन or part of protection mechanism in our body. This is the again overview of inflammation. Here, this is infection in the form of bacteria which is carrying PAMP. PAMP is recognized by both bacteria, and PAMP are recognized by macrophages. These are macrophages, and also by neutrophil. This becomes activated, as a result of which it releases IL-1, interleukin-1, tumor necrosis factor, and IL-8, which are chemotactic factors. These are liberated, these are soluble factors which ultimately enhance the vascular permeability, so that neutrophil in the surrounding uh, blood vessels, it can come out and is recruited for phagocytosis of the bacteria along with the macrophages, and the process of coming in the tissue after leaving its blood vessel is known as extravasation. Now, complement factors के बारे में बताया, so they can lyse directly by coating it, or these factors are released in that process. These factors activate mast cell. Mast cell is degranulated. आपने देखा बहुत ढेर सारे granules होते हैं, तो वो granules बाहर extra this cytoplasmic मेम्ब्रेन पे आके बस्ट कर जाते हैं. उनमें हिस्टामीन और दूसरे वैसो एक्टिव एमीन्स जो है लिबरेट हो जाते हैं. कीमोटैक्टिक और साइटोकाइंस, कीमोटैक्सिन्स एंड कीमोसाइटोकाइंस रिलीज होते हैं, which work for enhanced permeability of this blood vessel, so that more and more tissues and more fluid come to the site of injury, and we see the inflammation here. This is the figure of skin. Now this is another figure. ये neutrophil है. Neutrophil is flowing in the blood vessel. This is going in this direction. When there is some injury, it is not shown here, but there must be some injury or some requirement, some kind of repair or damage is here. Then chemokine and due to the effect of chemokines, they will get they will extravasate to the site of this tissue. So first of all, first step is of teethering, मतलब कि वो slow होने लगा, and this is endothelial cell in endothelial lining. तो यहाँ पे endothelial में selectins होते हैं. selectins ये आप देख रहे हैं, selectins से ये यहाँ पे इसके लिए यहाँ पे ये selectins के लिए रिसेप्टर्स हुए, और यहाँ पे इसके लिए लिगेंड होगा जिसके थ्रू ये बाइंड हो जाएगा. नाउ कीमोकाइंस यहाँ पे पहुँचने लग गए हैं एज अ रिजल्ट ऑफ ये. जैसे एक की बात करें तो वो पहले रुका, धीमे हुआ,
then started rolling, and this is the ligand, SLE ligand है. रोलिंग होके वो दो सेल्स के बीच में आया. यहाँ पे और फर्दर रिसेप्टर्स हैं जो उसको इसके एक्सट्रावेसेशन में हेल्प करने लगे. एंड फाइनली दिस कम्स आउट at the site of injury, or where there is some repair is required. So this is the rolling model, and this is the this is known as rolling model of neutrophil extravasation or neutrophil recruitment. इनके डिटेल्स, इनके मीडिएटर्स हम फिर से पढ़ेंगे in the second part of inflammation. For the timing, I'm reading this for you. Neutrophil extravasation. Neutrophils are induced to migrate from blood vessels adjoining site of infection through changes to the endothelial cells lining the blood vessels that are induced by products of activated macrophages and mast cells. ये जो कीमोकाइन से इनको एक्टिवेट कर देते हैं. ये इसमें इंटरल्यूकिन 1, TNF और IL-8 है. एंड हिस्टामिन है. न्यूट्रोफिल्स initially loosely attach and roll along the endothelium mediated via sialyl Lewis X SLE X mediated interaction with P and E selectin. सेलेक्टेंस में P और E टाइप के सेलेक्टेंस होते हैं. And E selectins that are upregulated on activated endothelium. Chemokines की वजह से ये भी activate हो गए. Under the influence of chemokines such as IL-8, neutrophils become activated, leading to activation of cell surface integrins. ये LFA secrete leukocyte फैक्टर्स हैं. ये भी एक्सप्रेस होने लग गए that provide firmer attachment to cognate receptors on the endothelium. Neutrophil become activated and leading to activation of cell. neutrophil के surface पे LFA activate हो जाता है, वो express होता है. और यहाँ पे ICAMs on endothelium become activated, और उनके थ्रू वो उनकी बाइंडिंग होना शुरू होती है. जैसे जैसे वो रोल करके इस पॉइंट पे आएंगे, इस पॉइंट पे आएंगे, जहाँ पे दो सेल्स आपस में काफ़ी लूज हैं, और उनके थ्रू ये एक साइड से दूसरे साइड में आ सकता है. द लैटर इंटरैक्शन एनेबल्स, कौन सा इंटरैक्शन? LFA और आईकेम के बीच में जो इंटरैक्शन है उससे न्यूट्रोफिल्स का मूवमेंट अरेस्ट हो जाता है, और एंडोथेलियम वॉल से वो रुक जाते, और वहाँ से जो भी गैप दिखता है उनको उसके थ्रू बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ एंडोथेलियम से माइग्रेट करके टिश्यू की ओर चले जाते हैं. यहाँ पे ये 3 कीमोटैक्टिक फैक्टर्स दिखाए हैं, IL-8, C3A एंड C5A. इन सारों के मीडिएटर्स के डिटेल हम फिर से नेक्स्ट पार्ट ऑफ इन्फ्लेमेशन में रीड करेंगे. सो इफ यू लाइक माय लेक्चर, प्लीज सब्सक्राइब इट and like it and share it. Thank you.